ये है कराची पाकिस्तान के दिवाली हिंदू कम्युनिटी फेस्टिवल कराची में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इन्होंने ये फेस्टिवल की तैयारियां की हुई है फॉर देयर फंक्शन दिवाली। दिवाली आने वाली है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बसती है। जैसे कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मेजॉरिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी हमारे हिंदू सिस्टर ब्रदर्स हैं। सो हमने डिसाइड किया जाकर थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं इनकी खुशियों में। हमने बहुत ही इंजॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया। वहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें बिक रही थी, इनके फंक्शन के दिए, खाने पीने की चीज़ें, तैयारियों की चीज़ें, फंक्शन की चीज़ें। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर आज जाकर व्लॉग बनाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर इन कराची पाकिस्तान। बहुत सारे 99% लोगों में हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर इनके फंक्शन फेस्टिवल्स हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया आप सबसे शेयर करती हूँ ये प्यारा सा मौका। हमें यहाँ पर बहुत रंग देखने को मिले, रंग भरे दिए देखने को मिले। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मेरी सारी पब्लिक, हमारी हिंदू मेजॉरिटी की पब्लिक कराची में या फिर पाकिस्तान से बाहर देखे कि कराची पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये अपनी छोटी छोटी खुशियों को कैसे बांटते हैं आपस में। हमें बहुत मज़ा आया इनके सारे रंग और ये प्यारे प्यारे रंग भरे पैकेट्स, दिए, सब कुछ देखकर मैं सोचती हूँ जब ये जलाते होंगे, अपनी सेलिब्रेशन करते होंगे, तब कितना मज़ा आया होगा। हमें यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत ही वार्म वेलकम मिला और हमें बहुत मज़ा आया। बेसिकली यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इनके साथ हमें भी खुशी बांटकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत इंजॉय किया, तो हमने क्यों नहीं सोचा कि आप सभी इंजॉय करें। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें बिक रही थी जो वो अपने दरवाज़ों पे लगाते हैं, घर की डेकोरेशंस में यूज़ करते हैं। हमने भी खूब सारी शॉपिंग की। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखेंगे पार्टीशन के बारे में, एग्जैक्टली 1947 में हुआ क्या था। और हमारे हिंदू ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ पर भी आज भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया में वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम बहन भाई मौजूद हैं। तो ऐसे हम आपस में डिवाइड हुए, लेकिन हम फिर भी एक हैं। हम एक दूसरे के त्यौहार में एक साथ हैं। आई होप आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखना ज़रूर, वो भी दिवाली से ही रिलेटेड है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट अपलोड करूँगी अगले व्लॉग में। आई होप यू गाइस enjoyed. See you guys soon later in another vlog. After 200 years of British rule over the Indian subcontinent, on August 15, 1947, it was split into two independent nations, Hindu-majority India and Muslim-majority Pakistan. The process was known as partition. Most people wanted independence, but what came after that was tragic. Some 17 million people were displaced, and an estimated 1 million were killed. Prior to colonization, the subcontinent was made up of princely states where many religions coexisted. Hindus were the majority, and Muslims were the largest minority. Historians say the British implemented a strategy known as divide and rule, promoting political divisions between followers of the region's main religions. But a freedom movement, mainly led by the Indian National Congress Party, saw members of these communities come together to resist British rule. Led by Mahatma Gandhi and others, the largely non-violent campaign forced the British to act, and the UK announced its plans to quit the vast nation after the Second World War. But that ignited fears about who would govern next. Making up 25% of the population, Muslims were worried about being a minority in a Hindu-majority country. Under imperial rule, they were protected and represented in a specialized system. So, Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, advocated for Muslims to have their own homeland, Pakistan. A section of Hindus also campaigned for an ethnic Hindu state. Divisions between the two groups deepened. Riots erupted in many places in which thousands were killed. In 1946, Lord Louis Mountbatten, the new British Viceroy to India, started talks with the Congress parties Jawaharlal Nehru and Jinnah. Mountbatten convinced the leaders to agree to the partition, creating two new states. Cyril Radcliffe, a British lawyer who had never been to India, was tasked with drawing up the borders.
He was given just 36 days to put together the partition project. Using outdated maps and census records, his committee came up with this: India, West Pakistan, and East Pakistan, which would later become Bangladesh. But they didn't assign Muslim-majority Kashmir to either country. This will cause problems later. As the British left in 1947, chaos erupted. Millions of Muslims, Hindus, and Sikhs suddenly found themselves on the wrong side of the border. They had to leave their ancestral homes, with millions of families separated until this day. The exodus of people triggered unprecedented violence, with mobs killing an estimated 1 million people and raping and abducting up to 100,000 women. What was supposed to be a celebration of independence from British rule turned into a bloody and brutal chapter in the history of the two countries. 75 years later, India and Pakistan remain bitter rivals, still disputing over their borders. There have been 3 wars over the Himalayan territory of Kashmir, which both countries claim as their own. On the Indian side, security forces are fighting rebels opposed to Indian rule. Meanwhile, India's Muslims are regularly subjected to attacks by Hindu groups, emboldened by the nationalist BJP government in power since 2014. The legacy of partition is complex and still felt in South Asia today.